Good morning, dear students. Hope you all are doing fine. As we have started with chapter The Fundamental Unit of Life in Bio, and last week we discussed simple introduction, discovery and history of the cell, and how the number and shape of cells vary in variety of organisms. Now today we'll discuss some important structural features of the cell, that is plasma membrane and cell wall. Every cell, whether it is an animal cell or a plant cell, has three distinct parts. First, the outer covering called plasma membrane or cell membrane. Second is the nucleus. And third is the jelly-like fluid present between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. And the entire content of the cell, including nucleus and cytoplasm, is called protoplasm. You can see in the diagram that plant cells have one additional outer covering that is called cell wall. That we'll discuss later in this topic. Next is plasma membrane. This is the outermost covering of an animal cell and outer covering of a plant cell. And it's quite flexible in nature and it is made up of two main components, proteins and lipids. As you can see in the diagram, the large circular molecules are proteins and the chain-like structure is of lipid molecules. It's a double layered structure actually. And how it helps cell to perform various functions. Firstly, it provides shape and individuality of the cell. Means क्योंकि एक सेल को सराउंड कर रही है उसके साइटोप्लाज्म को, तो ये सेल को शेप और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देती है. नेक्स्ट इज इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम सराउंडिंग्स. अब सेल के आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसको सेल के कंटेंट से अलग करके रखना, तभी सेल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन कर सकता है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. थर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट function that it allows to enter and exit of specific material in the cell. That is why it is called a selectively permeable membrane. Means, as you can see in the video, that it is allowing only some specific material to enter the cell and certain material which are not required by the cell या जो सेल के लिए हार्मफुल है वो मटेरियल ये सेल के अंदर अलाउ नहीं करती. और साथ ही में सेल का जो कंटेंट है वो भी सेल के बाहर नहीं आ रहा. तो दैट इज इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली स्पेसिफिक मटीरियल to enter or exit. That is why it is called a selectively permeable membrane. And in this way, it prevents the cell content from mixing with external material. Next is movement by diffusion. Means अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके थ्रू मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है वो दो प्रोसेस से होता है. फर्स्ट प्रोसेस इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज, एज यू कैन सी, इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. एंड थोड़ा सा उसको हम अगर बेटर वे में डिफाइन करें तो डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इन विच एनी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन दिस वीडियो, इनसाइड द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो पोर्शन है वो सेल का इंटरनल पोर्शन है और बाहर एक्सटर्नल मीडियम. इनसाइड देयर आर सर्टेन molecules or particles which are present in high concentration and outside their concentration is low. So these particles automatically leave the cell. And now you can see these red colored particles of oxygen gas. They are present in higher concentration outside the cell और वो अपने आप सेल में एंटर हो रहे हैं जहाँ अंदर सेल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है. एंड व्हाई द सेल हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? बिकॉज आवर सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन प्रोसेस. एंड यू नो रेस्पिरेशन, फूड को ऑक्सीडाइज करना टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली यूज अप होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है. इसलिए सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव द सेल ड्यू टू डिफ्यूजन एंड
रिवर्स टेक्स प्लेस विद ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन सेल के अंदर यूज हो रही है तो कम है, एंड इट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल, बिकॉज ब्लड हार्ट के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, तो बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो इन दिस वे डिफ्यूजन हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज इन ऑल लिविंग सेल्स. How diffusion is significant for all of us or for every living organism? Because it helps in gaseous exchange required for photosynthesis or respiration by all living organisms. Next is any other certain essential minerals which are to be entered in the cell or which are to be left by the cell, they are allowed to transfer through diffusion only. Next is स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल. अब फ्लावर्स अपनी स्प्रेड करते हैं स्मेल को, फ्रूट्स की स्मेल आपको आ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन. एंड फ्लावर्स अपना स्मेल स्प्रेड करके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, दैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑल्सो. नेक्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दे हैव अ सिंगल सेल, तो वो अपनी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का ट्रांसफ़र करते हैं. और अगर वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक अमीबा, तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू ही बॉडी में एंट्री होती है. Osmosis. Second process by which materials can move inside or outside the cell is osmosis. Osmosis is a special case of diffusion. है ये एक तरह का diffusion ही, but special इसलिए because it takes place only with water, whereas diffusion is taking place for water or other fluids also. Water as well as gases, for both diffusion can take place, but osmosis takes place only for water or solvent. Solvent is a kind of liquid particle of a liquid portion of any solution. So now how osmosis takes place, you can see in this video. Water molecules, where they are higher in concentration, they pass through the plasma membrane and enter in the cell by the process of osmosis. मतलब water molecule का cell membrane के through enter होना, this process is called osmosis. Cell membrane is a kind of selectively permeable membrane, or it is a kind of semi-permeable membrane. And what happens when cell is kept in such a medium where amount of water is higher in the cell as compared to outside? As you can see, water is leaving the cell. This type of solution is called hypertonic, जहाँ पानी का जो अमाउंट है कम है सेल के कंपैरेटिवली. दूसरा केस है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है सेल के कंपैरेटिवली, तब वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर से सेल के अंदर एंटर होते हैं. थर्ड केस इज आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मीन्स सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द सेल. तो दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, they are entering as well as they are leaving the cell. So this type of movement in which only water particles can pass through a cell semi-permeable membrane from their higher concentration to lower concentration in the particular direction only, then it is termed as osmosis. On the basis of types of solution, osmosis can be classified into two types: endoosmosis and exoosmosis. How it takes place, let us see through this activity. For this activity, we require 2 glasses of water, grapes, raisins, that is songi जिसको हम कहते हैं, and sugar, or you can take salt also, common salt. Now what we need to do is add a few tablespoons, 5-6 tablespoons of sugar in the second glass, and now you need to add grapes to the second glass and raisins to the normal water, means without sugar water, and keep this set up for 24 hours. Next day when you check, you will observe that raisins are swell up and grapes are shrink. So this happens because of these two processes named as endoosmosis and exoosmosis. Actually what happens when you place raisins in water, water
में सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है और कोई चीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं है, मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक का मतलब होता है, हाइपो मीन्स लोअर, कि किसी भी सॉल्यूट या किसी भी ऐसी चीज़ जैसे शुगर है या सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है या नहीं है, ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज आउटसाइड द सेल. मतलब आपने सिर्फ वाटर में जब सेल को रखा है तो वो वाटर वहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक डाइल्यूट सोल्यूशन का रोल प्ले कर रहा है. और ऐसे सोल्यूशन में जब हम एक सेल को रखते हैं तो सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल. तो वाटर कहाँ एंटर होगा? ऑब्वियसली वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल फ्रॉम आउटसाइड. एंड अब वाटर सेल के अंदर आ रहा है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सेल विल स्वेल अप. तो दिस प्रोसेस इन विच सेल्स स्वेल अप due to entry of water when they are placed in dilute hypotonic solutions, then the process is called एंडोऑस्मोसिस. और दूसरा केस जो हमने देखा कि ग्रेप्स को जब हमने शुगर सिरप में रखा था, शुगर सिरप कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा शुगर होनी चाहिए उसमें. इन दैट केस वहाँ पर क्या केस था कि शुगर की कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा थी, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक सोल्यूशन था, बट वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी एज कंपेयर टू द सेल्स. देन ऑस्मोसिस के लॉ के अकॉर्डिंग वाटर विल लीव द सेल बिकॉज सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सोल्यूशन प्रेजेंट आउटसाइड. तो सेल एग्जिट्स द वाटर एग्जिट्स द सेल, और क्या होगा? अब सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा और ऑब्वियसली योर दैट ग्रेप्स विल श्रिंक. तो किसी भी सेल को अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं देन दैट टाइम द सेल विल श्रिंक ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस. तो पानी का बाहर जाना सेल से प्रोसेस इज एक्सोऑस्मोसिस, पानी का एंटर होना सेल के अंदर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस. And if you place the cell in such type of solution when the concentration of solution are same, मतलब दोनों जगह पे water molecules का number same है, तो in that case water molecules enter or exit in equal number. That means no net osmosis takes place and cell size remains same. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली कोई भी सेल अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, जैसे रूट्स ही हैं वो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो रूट्स के अराउंड छोटे छोटे हेयर होते हैं, दैट रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस ओनली, बाय ऑस्मोसिस ओनली. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल्स. अब आप कभी भी किसी फ्रूट या वेजिटेबल्स को अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आप उस पर सॉल्ट लगा के रखते हो, समटाइम्स आपने ऑब्जर्व किया होगा पिकल्स बनाते टाइम हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर सॉल्ट स्प्रे करते हैं तो वो श्रिंक हो जाती हैं. तो दिस इज़ बिकॉज लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, बिकॉज सॉल्ट वहाँ पर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन का रोल प्ले कर रहा है. इन दैट केस द fruits and vegetables shrink by exosmosis and it prevents them from spoiling, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है सेल्स में से और वो प्रिजर्व रहती काफ़ी टाइम तक. तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज टर्जिडिटी इन सेल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर कुछ टाइम तक आपने फ्रिज में रखी हैं या बाहर पड़ी हैं तो दे shrink due to continuous loss of water. But if you sprinkle water on them, कभी देखा होगा आपने जो vegetable sellers हैं they also sprinkle water on vegetables and fruits. This is because water spray करने से water उनके enter होता रहता है osmosis के through and cells firm रहती हैं, turgid रहती हैं, एक pressure रहता है cells के अंदर. And next is absorption of water by यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. अब अमीबा या और भी जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, तो दे एब्जॉर्ब वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस और नॉर्मली ऑस्मोसिस. एब्जॉर्प्शन एंडोऑस्मोसिस है, लीव करना वाटर का लॉस होना दैट इज एक्सॉस्मोसिस. नेक्स्ट इज एक्वायरिंग फूड बाय अमीबा. दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. हाउ अमीबा एक्वायर्स फूड, मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक फीचर है जिसकी वजह से वो फूड को एंगल्फ करने में हेल्प करती है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इन अमीबा इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. हैव अ लुक एट द वीडियो. यू कैन सी दैट whenever some solid or liquid food particles come in contact with amoeba, its plasma membrane projects outside and it forms a kind of
projections called pseudopodia, और ये उस food particle को अपने अंदर engulf कर लेते हैं, और ये food particle धीरे धीरे सेल के अंदर एंटर हो जाता है और वहाँ एक फूड वैक्यूल फॉर्म होती है, एंड दैट फूड वैक्यूल हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन प्रोसेसेस एंड ऑल. तो दिस प्रोसेस ऑफ taking in fluid or solid particles by amoeba or certain other organisms using these kind of pseudopodia is called endocytosis. Next is the outermost covering of a plant cell or some bacterial cell and fungal cell is cell wall. As I told you earlier also, that plant cells, because they do not have skeletal system in their body, so they require a kind of rigidity in their body. So that is given by this rigid cell wall. जहाँ plasma membrane flexible covering है, वहीं cell wall एक rigid covering है around the plant cell, fungal cell and bacterial cells. This cell wall is consisting of cellulose. Cellulose is a kind of carbohydrate. Plants में cellulose की बनी है और fungi में chitin की बनी है. Chitin is a kind of complex sugar. Now, what is the important function of cell wall? Firstly, it maintains shape. Again, because it is a rigid covering, so it provides rigidity and shape to the plant cell. Next, it provides mechanical support because of its rigidity. अब ये इंजरीज से भी प्रोटेक्ट करती है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है सेल को. नेक्स्ट इज फ्रीली परमिएबल. अब ये किसी भी तरह का मटेरियल सेल वॉल के थ्रू एंटर या एग्जिट कर सकता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रीली परमिएबल. किसी को भी अलाउ करना, किसी भी मटेरियल को एंटर या एग्जिट होने देना. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट हेल्प्स टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम एंड प्रिवेंट्स सेल बर्स्टिंग. अगर आप किसी प्लांट सेल को एक ऐसे मीडियम में रखते हो जहाँ जो हाइपोटोनिक है, मतलब जहाँ से एंडोऑस्मोसिस होना है, तब उस केस में ये सेल को बर्स्ट होने से रोकता है. यू कैन सी इन दिस वीडियो. फर्स्टली look at the animal cell. So this is a kind of red blood cells. When red blood cell or any animal cell is placed in water, तो एक हाइपोटोनिक मीडियम हुआ ये, तो वाटर कॉन्टिन्यूसली एंटर होता है और एट अ टाइम इतना सेल स्वेलअप हो जाती है कि सेल स्टार्ट बर्स्टिंग. तो दिस टाइप ऑफ बर्स्टिंग, if it takes place with blood cells, then it is called hemolysis. And next, consider this case of plant cell. In a plant cell, as it is covered by an outer covering cell wall, which is a thick rigid covering. So when water enters in the cell through endoosmosis, और अंदर से जो प्रेशर सेल को लगता है, जो सेल को बर्स्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रेशर, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर अंदर बाहर की तरफ से सेल वॉल लगाती है. मीन्स अंदर से वाटर प्रेशर लगा रहा है जो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आया, बाहर से सेल वॉल उस पर प्रेशर डाल रही है. तो एक इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर मेंटेन हो जाता है सेल के अंदर, एंड दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक मीडियम. तो दिस इज हाउ सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंड अदर सेल्स. Now we have a quick recap of all the topics which we have covered today. Every cell is surrounded by a plasma membrane. It's a flexible covering. It is selectively permeable membrane. Gaseous exchange takes place through diffusion. Water enters or exits a cell through osmosis. In hypotonic solution, endoosmosis occurs and cell swells up. In hypertonic solution, exoosmosis occurs and cell shrinks. Plant cells, fungal cells and bacterial cells have cell wall. Cell wall prevents plant cells from bursting in hypotonic media, as we have discussed. Thank you. And now I think you are able to solve the given worksheet. Do it. Have a good day.